Jai Gurudev students. Students, welcome you all in the economics class. Students, today's class we are studying organization of data. Organization of your data, you know, student, that before that you have studied that we have to collect the data. That the first stage of statistics is collection of data, and when the investigator collects data of different types, that data will be meaningful only when we are organizing the data properly. That is, organization of data is the second stage. After collection of data, this will be the raw data which is not meaningful, which is not easy to understand. That is, different types of information we have collected as under collection of data, but it can be meaningful only, it can be used for conclusion only when this raw data will be organized properly. So that is organization of data, कि जब आप किसी चीज को इंफॉर्मेशन को, आपने बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए, जब आप उस इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करते हो, then only it will be easy for us to understand and to find out the conclusion. So the meaningful conclusion can be drawn only when the data will be organized, and this process is known as the organization of data. Now what is organization of data? Organization of data refers to the arrangement of figures in such a form that comparison of the mass of similar data may be facilitated and further analysis may be possible. मीन्स आपने जो भी डेटा कलेक्शन किया है, न्यूमेरिकल वैल्यू, आपने जो भी नंबर्स कलेक्ट किए हैं, वो नंबर्स तभी आपको कंपैरिजन, आप उसको स्टडी करने लायक बनेंगे जब आप उसको, इट विल बी प्रेजेंट इन अ सिंपलर फॉर्म. मीन्स यू आर ऑर्गेनाइजिंग देम प्रॉपरली. आप उसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करोगे, उसको अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट यू आर पुटिंग द इंफॉर्मेशन, एंड देन इट मे बी फैसिलिटेटेड एंड फर्दर एनालिसिस मे बी पॉसिबल. मतलब आगे की एनालिसिस करने के लिए, आगे की स्टडी करने के लिए आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, उस इन्फॉर्मेशन को आपको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करना है. देन द रॉ डेटा विल बी यूज फॉर मीनिंगफुल कंक्लूजन. एंड व्हेन यू आर ऑर्गेनाइजिंग द डेटा प्रॉपरली इन क्लासेस, that is according to the characteristics, if you are presenting the data in proper class, so it is known as classification of data. Classification of data means जब आप किसी इंफॉर्मेशन को, किसी भी चीज को प्रॉपरली क्लासिफाई करते हो, means according to their characteristic, there are different characteristics of the group of the population. Just like आपने कोई information collect की, suppose if you have collected the information of 200 families in a colony, so that you have collected the data of these 200 families, of their income, their expenditure, their education, their earnings, and so many information you have collected of these particular families. So these 200 families, the data will not be meaningful to you, and it will not be understandable for you if it is not properly classified. So classification can be done according to their characteristics, that you can classify them into educated and non-educated families. Means there are the families, they are those who are educated families, and there are the families they are not educated. तो इनको आप अलग अलग क्लास में डिवाइड करेंगे, एजुकेटेड फैमिलीज एंड नॉट एजुकेटेड फैमिलीज, और उसके अकॉर्डिंग आप उस डेटा को प्रेजेंट करेंगे. तो इट विल बी नोन एज द क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, जिसको कि आप अच्छे से इजीली समझ सकते हो. उसको इट विल बी मोर रिलायबल, इट विल बी मोर एक्यूरेट, and it will be more meaningful. So after organization of data, the next step is classifying them into different classes according to their characteristics. Now what is classification of data? Classification is the process of arranging things in a group or classes. जब किसी भी चीज को आप properly arrange करते हो, तो this is the process of arranging things in a groups or classes according to their resemblance and affinities, and gives expression to the unity of attributes that may exist amongst a diversity of individual. That means if you are arranging the group data in a groups or classes according to their characteristics, उनकी characteristics के according, behavior के according आप उनको properly classify करेंगे. Means according to their attributes you know the behavior, means उनकी क्या characteristics है, क्या behavior है, उसके according आप उनको properly arrange करेंगे, classes करेंगे. Because the data may be of diverse form, there is a diversity of individual, means उसमें कई तरह की different characteristics हैं. तो उनको आप properly अगर organize करते हो, तो it will be easy for us to understand and it will be more meaningful. So students, organization of data means किसी चीज को properly organize करना. अगर आपने कोई बहुत सारी चीजें इकट्ठी करी है, और अगर आपको उसमें से कुछ चीजों का बताना है कि आपके पास कितनी चीजें हैं और वो कैसी हैं, तो आपको एकदम से समझ में नहीं आएगा कि आप किस तरह से कैलकुलेट करें.
बट अगर आप उसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करेंगे, सीक्वेंस में ऑर्गेनाइज करेंगे, और ऑर्गेनाइज करने के बाद अगर आप उसको डिवाइड कर देंगे अकॉर्डिंग टू ग्रुप्स और क्लासेस, तो आप उसको ग्रुप वाइज और क्लास वाइज स्टडी करने के लिए इट विल बी वेरी easy for you, so that you can study properly, you can make out the results properly, you can make out the conclusion properly. So organization and classification of data is very important in statistics, because these after classification it will be very easy for us to understand. The investigator can easily find out the solution of the problem, and for the further analysis also classification is necessary. जब हम किसी भी डेटा को हम एनालाइज करेंगे, उसके एनालिसिस के लिए हमें क्लासिफिकेशन बहुत ज़रूरी है. तो अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू द डिवाइडिंग इनटू क्लासेस और ग्रुप्स, we can understand the particular data and we can analyze it properly. Now there are some objectives of classification. When you are doing the classification of data, the classification of data has some objectives. Now what are the objectives of classification of data? Classification of data is, first is brief and simple. Brief and simple, that means whenever investigator has collected the different types of data and data of different population, means the number of numerous people are there and numerous problems are there, and the investigator is collecting different problems, different data of different situations, so it will be presentable only it will when it will be make it simple and brief. So our classification can make the data brief and simple, so that हम उसको easily study कर सकते हैं, easily इसको समझ सकते हैं, because after classification the data can be brief and simple. Next is utility. Classification can make the data more meaningful and it will have some utility. For which purpose we are collecting the information, हम जिस चीज के लिए उस information को collect कर रहे हैं, data collection कर रहे हैं, वो हमारे लिए तभी उसकी utility होगी जब उसको हम properly classify करेंगे. तो क्लासिफिकेशन से जो है डेटा विल बी मोर it will have some utility and is more meaningful for us. Distinctiveness. Next objective of classification is distinctiveness. That means one data can be distinct from other data and it can only be noticeable when it will be made classified. आप देखते हैं कि जो आपने जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है, वो जो कई लोगों के बारे में आपने जो डेटा कलेक्शन किया, दैट विल बी having some same distinct characteristics और some are having same characteristics. तो जब आप एक डेटा को दूसरे डेटा से कंपेयर करेंगे या उसको डिफरेंसेस कैलकुलेट करेंगे, तो इट विल बी ओनली पॉसिबल बाय क्लासिफिकेशन. जब आप उसको अलग अलग ग्रुप्स में क्लासेस में क्लासीफाई करेंगे, देन ओनली द डेटा विल बी डिस्टिंक्ट फ्रॉम वन फ्रॉम अनदर. आप एक से दूसरे को अलग अलग डिफरेंसेस फाइंड कर सकते हैं. नेक्स्ट इज कंपैरेबिलिटी. द डेटा कैन बी मेक कंपेरेबल ओनली आफ्टर क्लासिफिकेशन. अगर आपको एक डेटा को दूसरे डेटा से कंपेयर करना है, कंपैरिजन करना है, you have to find out the differences. So comparability is only possible by classification. तो classification के थ्रू आप डेटा को कंपेयर कर सकते हैं. So it can be comparable only because of classification. Scientific arrangement. Classification can make the data scientifically, that is the data can be arranged scientific according to the in classification, that is classification makes the data more scientific. आप उसको properly scientifically arrange कर सकते हैं. That scientific arrangement will help you, the data will be more realistic to you, more accurate because it will be properly classified and the classification will be done systematically. So that systematic arrangement of the data makes the data more meaningful and accurate. Next is attractive and effective. When you are presenting anything in a proper form, proper classification, so the data will be more effective and attractive. आप देखते हैं कोई भी चीज को आप अगर एकदम से इकट्ठा रख देते हैं और उसको आप जब तक आप उसको प्रॉपरली अलग अलग नहीं करेंगे, प्रॉपरली अरेंज नहीं करेंगे, तब तक वो आपको दिखने में बहुत अट्रैक्टिव नहीं लगेगी और ना ही उसका कोई इफेक्ट पड़ेगा. जब भी आप किसी चीज की स्टडी करते हैं या कोई भी आप कोई काम करते हैं, अगर वो प्रॉपरली सिस्टमेटिकली अरेंज किया हुआ हो, it will be classified into properly groups or groups or classes, so then only it can be attractive and effective. So when you want to make the data attractive and effective, it will be only possible by classification, because classification makes the data attractive and effective. So students, you can understand that classification का मतलब है कि किसी भी चीज को properly arrange करना, and that arrangement is done according to the characteristics and the behavior and the attributes. So that will be classified according to the proper classes and proper groups. So then only the data can be easy to understand and the further analysis will be possible according to classification only.